Hello guys, I am Saurav Balodi and I welcome every one of you joining from across the globe to my YouTube channel. This channel is dedicated to cover all the aspects of living life to the fullest. In this particular video, I'll be covering the cost of studying in Canada. In more videos of this series, I'll be covering how to choose the colleges, universities, how to find accommodation in Canada, the reality of part-time jobs, and a lot more. Let me give you a brief about myself first. Currently, I am enrolled in Global Business Management, that is GBM course at esteemed Centennial College, and will be traveling to Canada this January. We'll be traveling to Canada in January 2021, and I have done my entire visa filing, research about colleges in Canada, and a lot of other processes of getting student visa without any agent or agency. So I can tell you the authentic and detailed cost of every process of studying in Canada. Additionally, I'll try to use both English and Hindi language in my videos so that the information seekers, students, and people from anywhere on the map can relate to it and use this information to their best of the use. So without any further ado, let's get started with the video. The very first and general requirement to study in Canada requires an aspiring student to give an English proficiency test. So let me explain you about what an English proficiency test is. So there are basically two popular tests. The first is IELTS, that is International English Language Testing System, and the other is TOEFL. IELTS is not only necessary for you to get admission to colleges or universities, but is mandatory for you to get the student visa. The cost of this test is around 230 to 250 Canadian dollars, and if I have to translate that into Indian rupees, that will be 13 to 14,000 इंडियन रुपीज़. सो जो भी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कनाडा में पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं, एंड फॉर ऑल द अदर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एज वेल, प्लीज़ नोट दैट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी है आपके वीज़ा के लिए. बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी नहीं भी मांगते हैं इसका टेस्ट, बट ये मैंडेटरी है वीज़ा पाने के लिए. सो इसकी कॉस्ट अराउंड 13 to 14,000 इंडियन रुपीज़ तक होती है. So now coming on to the second extremely important expense on this list is the expense of tuition fee of the college. The tuition fee varies for colleges throughout the provinces, but on average, if I have to give a number, it is somewhere around 16 to 20,000 Canadian dollars per year. Again, जो भी इंडियन पेरेंट्स और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक साल की फीस रफली 10 से 12 लाख इंडियन रुपीस होती है. ये कॉलेजेस और कोर्स पे डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोविंसेस के हिसाब से भी, बट इफ I have to give an average of the tuition fee for a year, I'll say that throughout the Canada it's about 10 to 12 lakh INR Indian rupees tuition fee per year. GIC is another mandatory expense that every aspiring student needs to pay. Let me brief you a bit about GIC. All international students are required to deposit their 1 year's living expense into a Canada-based bank to qualify for student visa and to study in Canada. So the GIC account, we can take it as a proof that the student has sufficient funds to survive in Canada for a year. The minimum of 10,000 Canadian dollars needs to be put in a Canadian bank. This bank repays this amount to the international student over 12 months of the period from the day the student lands. So this money is eventually helping an international student to start a new life in a whole different country. So that's an expense of GIC that should be taken care of. अपने अगेन जो भी इंडियन फ्रेंड्स और पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, GIC अकाउंट बनवाना ज़रूरी है. एक GIC अकाउंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही इजी टर्म्स में. GIC अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आप एक कनाडा के बैंक में ओपन करते हो, और
उसके बाद उस पर 10,000 कनेडियन डॉलर्स डालते हो और वो आपके बच्चे को या एस्पायरिंग स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने के लिए आता है उसे 12 मंथ के पीरियड में मिलता है, जिससे कि वो यहाँ पे अपना लाइफ शुरू कर सके। थोड़ा से हार्ड ना हो, पार्ट टाइम मिलेगी, कितने टाइम बाद मिलेगी वो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए एक ब्लॉक्ड अमाउंट होता है जो 12 मंथ के पीरियड पे 12 मंथ के टाइम तक मिलता रहता है बच्चों को। सो कॉस्ट अगर इसकी INR में बात करें तो 5.5 से 6 लाख रुपए इंडियन रुपीज में ये कॉस्ट होती है। सो नाउ कम्स द कॉस्ट ऑफ वीजा एप्लीकेशन एंड मेडिकल। The visa application cost is same all across the globe, which is 150 Canadian dollars. On the other hand, the cost of getting the medical done differs from country to country. The cost of medical varies from 150 to 200 Canadian dollars. अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन की फीस वही है, सेम है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, 150 Canadian dollars। अगर ट्रांसलेट करें और अगर कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में तो वो 9 से 11,000 INR होती है। बल्कि जब मैं खुद अपना मेडिकल करवाने गया था तो मेडिकल की कॉस्ट कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी भी वेरी करती है। मैं चंडीगढ़ में करवाने गया था, मेरी कॉस्ट वॉज अराउंड मेडिकल की वॉज अराउंड 5,500 से 6,000 रुपये मेडिकल में लग गए थे और वीज़ा फाइल की अपनी 150 Canadian dollar फीस होती है। तो मिला के अगर हम बात करें मेडिकल और वीज़ा फाइलिंग की फीस, सो 17-18 हज़ार रुपये तक आपको पड़ जाती है। Okay, so now the very first cost that incurs after the student visa approval is the cost of flight tickets. This cost is very subjective and varies from individual to individual airlines and also varies from country to country. Here I'll give you a basic and average price of an economy class ticket. So on an average, if I have to talk about, it costs around 850 to 1,200 Canadian dollars. The flight tickets cost around 850 to 1,200 Canadian dollars. Yeah, so that is it about flight cost. INR में अगर हम इकोनॉमी क्लास की टिकट की बात करें तो 40,000 से 60,000 के अराउंड के बीच पड़ती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी टिकट करवा रहे हैं, कौन सी एयरलाइंस में करवा रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में लेकर, बट एवरेज 40 से 60,000 रुपीज की होती है। Now another mandatory expense that I am going to talk about is the expense that you spend on Canadian currency, Forex card or Canadian cash that one carries in with themselves when they come to Canada. Again, this is an individual call that what amount of Forex, what amount of currency you want to carry with yourself. But the minimum Forex charge or cash I recommend one must carry for smooth sailing for the very first few weeks is 1,000 Canadian dollars. So just a pro tip that you can split this 1,000 Canadian dollars into 500 Canadian dollar recharge in your Forex card and another $500 as cash. This amount will help you to stay in Canada for the first few weeks. That is until you get your initial 2,000 Canadian dollars from the GIC account that you have opened there. So yeah, that is about the currency that you carry with yourself. And Indian parents और स्टूडेंट जो भी वरीड हैं कितना कनेडियन कैश कैरी करना होता है, सो लेट मी टेल यू, 2,000 Canadian dollars जैसे ही आप वहाँ जाते हो, आपका जो GIC अकाउंट है वो आपको दे देता है, आपका बैंक आपको दे देता है। बट अगर कोविड अभी चल रहा है और ये क्वारंटीन वाला फेज चल रहा है, अगर टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप अपने साथ 1,000 Canadian dollars कैरी कर लेते हैं, सो दैट विल बी गुड, दैट विल बी रिकमेंडेड फ्रॉम मी एज वेल। सो आपको अगर डिवाइड करना है, प्रो टिप अगर मैं दूं तो डिवाइड करना है, ये 1,000 Canadian dollars को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। दैट इज $500 का फोरेक्स कार्ड में रिचार्ज करवा लीजिए और $500 का Canadian dollars का कैश ले जा लीजिए। फोरेक्स कार्ड जो इनिशियल ऑनलाइन पेमेंट्स हमें कभी करनी पड़ती है, बिलिंग ऑनलाइन होती है, उसमें यूज हो जाता है, और कैश अदरवाइज आप अगर किसी वेंडर पे जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो तो आप यूज कर सकते हो। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, द कॉस्ट ऑफ इनिशियल अकोमोडेशन that one will be booking from their home country is another expense.
Please note that it can and cannot be the house you rent permanently, but is surely the house that you opt to stay till the time you search for permanent accommodation in Canada. One can book an Airbnb for the first 15 days from their home country, and it costs around it costs around 600 Canadian dollars on an average. एंड इंडियन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इनिशियल अकोमोडेशन का कॉस्ट जो आपको एयरबीएनबी पे लेने पे पड़ता है, जो आप अपनी होम कंट्री इंडिया से बुक करवाते हैं, दैट इज़ अराउंड 25 to 35 INR. और ये ज़रूरी नहीं है कि ये घर आपका रेंटेड परमानेंट घर हो. ये इनिशियली जब आप जाते हो, उसके बाद आप रिसर्च करोगे, लोकेशन देखोगे, आपका बेसमेंट में लेना है, प्राइवेट लेना है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करोगे, उसके बाद एक जगह जाके शिफ्ट होगे. बट इनिशियल जो कॉस्ट आती है एयरबीएनबी की, जो आप करवाते हो इनिशियल 1-2 हफ्ते रहने के लिए, उसकी कॉस्ट 25 to 35,000 आती है. सो या, and finally guys, we have come to the end of this video, and I'll be uploading more videos on my channel to help you folks to make your transition to Canada as an international student easy. I'll be uploading more videos on what are the requirements to study in Canada, how to select a college, and a lot more. And furthermore, one more thing I want to tell you guys, that I'll be traveling to Canada in January 2021. Therefore, I'll be posting a lot of content about accommodation, immigration, documents required, quarantine plan, winter shopping. So stay tuned and subscribe to my YouTube channel for regular updates. And if you have found this video informative, kindly like this video, share it with aspiring students and your friends, and tell me in comments if you got any questions. I'll try to answer them